the society, their rules, so to say. It's like it's just heroine. It's heroine life for them. जो हमारे टाइटल में जो बड़ी हीरोइन बनती है, द वे टू से आई मीन द वे इट इज सेड, वो ताना ही है. No. Do you think I can play a villain? It is about acting. Shared this thing with a friend that so basically it got to know that I wanted to be a Miss India. पता नहीं खुद को क्या समझती है मिस इंडिया से, इसको मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है. I remember he called me up and he broke down. He started crying. I said, भाई क्या हो गया? तो he said, यार मेरी ना I've applied to, मतलब I gave interviews to 2 companies और दोनों से rejection आ गया है. And I told him कि यार I तो get rejected 10 times in a day. और ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाई आपको पार्ट मिला है बट किसी की वजह फॉर सम रीजन किसी के कनेक्शन के थ्रू किसी और को वो पार्ट मिल गया, तो इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. पहले तो मुझे जानना सिचुएशनशिप आप लोगों के लिए क्या मतलब है सिचुएशनशिप का. Hi everyone, you all are watching ENT Live. I am Divya with you. As we all know, Korean dramas, K-dramas, हमारी इंडियन ऑडियंस को कितने ज्यादा पसंद है. And Amazon Mini TV is bringing you something very similar to this. सीरीज का नाम है बड़ी हीरोइन बनती है और उसकी कास्ट आज मेरे साथ है. हाय प्रेरणा, हाय राजीव, हाय निखिल. Hi दिव्या. How are you guys? Very well. How are We are you, Divya? great. एक्सीलेंट. Yeah, how are you? सबसे पहले तो मुझे आप तीनों से ही जानना है कि आप तीनों के दिमाग में हीरोइन टर्म का मतलब क्या है. मतलब जब कोई किसी को कहता है ना बड़ी हीरोइन बन रही है, आई बड़ी हीरोइन, तो व्हाट डज दैट मीन? So I think बड़ी हीरोइन बनती है ये एक मोर ऑफ ताना है, टॉन्ट है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं स्पेशली एज वुमेन. इसके सिमिलर भी टर्म्स है. खुद को क्या समझती है, खुद को बहुत हीरोइन समझती है, सो बड़ी हीरोइन बनती है ये एक ताना है. अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ताना. सो या ओके प्रेरणा, अकॉर्डिंग टू यू? Yeah, so first of all, very interesting question because I think the term heroine, matlab, what it means, it's not really connected to anything else because heroines are people like actresses, right? We call actresses heroines. But in life, when people say it as a tana, it does not really mean it is not related to acting or films. It's like it's related to anything a woman wants to do at all. If it's not according to what they think, if it's not according to what the society, their rules, so to say, it's like it's just heroine. It's heroine life for them. Just like even if she wants to study further, whatever, even if that is what is not allowed in their home, that will be heroine. ये तो बड़ी heroine बनती है. So that's why I think it's a very interesting line because people might think, okay, it's related to acting, but it's genuinely not in society, in reality. Yeah. And Rajiv, according to you, being a male. No, but as Nehal and Prerna said कि हीरोइन जो हमारे टाइटल में जो बड़ी हीरोइन बनती है, द वे टू से आई मीन द वे इट इज सेड, वो ताना ही है. बट Okay. एंड ऑब्वियसली एंड उसका सबटेक्स्ट ये है कि तू खुद को समझती क्या है, राइट? खुद को क्या समझते हो, दैट्स द सबटेक्स्ट. बट इफ you know the person, the woman, if she basically takes upon herself to show कि देखो भाई I am something, you know, I have मतलब substance, मैं कर रही हूँ जो मुझे करना है, वो हीरोइन को वो ताना से वो फ्लिप होके it could become yeah I am a heroine, you know. Okay, confidence comes. Exactly. मतलब आप उसी जो दुनिया बेसिकली दुनिया उसको मीनिंग दे रही है, एक गलत मीनिंग दे रही है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन उसको दे रही है, पर आप उसको फ्लिप करके यू नो यू शो द वर्ल्ड नॉट इन अ इगोइक सेंस बट कि या आप कुछ कह रहे थे. हाँ मैं हूँ. राइट. मैंने ट्रेलर देखा. ट्रेलर बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही लवली वाइब्स आ रही है ट्रेलर से. मुझे ये जानना है प्रेरणा से, क्योंकि प्रेरणा उसमें ऐसा रोल कर रही है जो एक स्मॉल टाउन गर्ल है और बड़े शहर आ गई है, कुछ तो उसे बड़ा करना है. आप ये बताओ कि वेल क्वेश्चन मेरा तीनों से ये स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेरणा कि जो कोई स्मॉल सिटीज में रहता है, स्मॉल टाउन्स में रहता है और फिर वो ऐसे बिग सिटीज में मूव करता है करियर की वजह से या जैसे भी, तो उसको क्या डिफिकल्टीज आती है? व्हाट डू यू फील? या फिर आपके करियर की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज आई थी? नहीं, डिफिकल्टीज तो फॉर श्योर आती ही है. स्मॉल टाउन लाइक वहां पे तो सब कुछ अलग. पहली बात तो आपकी फैमिली आपके साथ है, आप अपनी फैमिली से दूर जाते हो तो वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है.
फिर हर चीज खुद फिगर आउट करना, सारी चीजें खुद देखना, रहना, जॉब है, इतनी सारी चीजें हैं। और उसके बाद अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है कि ये लाइफ में करना है, तो उसके बारे में हर चीज फिगर आउट करना इज अ लाइक अनदर बिगर चैलेंज। तो सिमिलरली मतलब हम सबकी लाइफ में आई थिंक सेम जर्नीज रही है। हम सब अपने अपनी जगह से उठकर एक शहर आए हैं कुछ काम करने के लिए, और इसीलिए ये स्टोरी में भी बिकॉज ये मैसेज मतलब इस मैसेज को कन्वे करने के लिए ऐसा कैरेक्टर बहुत जरूरी है ना, बिकॉज कुछ अचीव करने के लिए वो जा रही है और उसको ये ताने फेस करने पड़ रहे हैं। और फिर हमें या पता चलता है कि सिर्फ उसको नहीं, कितने लोगों को ये ताने फेस करने पड़ रहे हैं, इवन हाँ दो और उनका और बैकग्राउंड डिफरेंट है। और मैंने हम्म। ट्रेलर में भी देखा कि वो ऐसे देख रही है, नोटिस कर रही है, बोल रही है यार यहाँ तो सबके अफेयर शफेयर चल रहे हैं, व्हाट इज दिस। शी इज वेरी कंफ्यूज। शी इज वेरी कंफ्यूज बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड टू हर, एंड वही वो बहुत ज्यादा उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ किस दुनिया में वो आ गई है, एक बहुत ही घरेलू माहौल से निकल के। तो ये उसके लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा शौक था। मेरे लिए पर्सनली ऐसा कोई शौक मुझे अभी तक नहीं हुआ है, बट आई थिंक हाँ काजल को तो ये हुआ था। ओके एंड यू स्नेहल एंड राजीव। Oh, yes, a lot actually. Not nothing related to changing cities or coming from a small town. But I mean, I've been a Mumbai girl, but I don't come from a very well-to-do financial background. So growing up, chasing my dreams when it comes to academic options that I would prefer, or my chances of getting into Miss India or an actor, growing as an actor. I think I've faced these challenges a lot where, your family is not with you, people around you are not very supportive, and everything that you choose to do out of choice or to show how strong you are as an individual, or strong you are to have your own choices, to make your own choices. I've very often come across friends and people who have, sort of tried to remind me that you can't do this because you don't come from a certain background, or because you're a woman. I still remember this one instance where, I had shared this thing with a friend, that so basically it got to know that I wanted to be a Miss India. I wanted to participate in a Miss India pageant, and he had saw some app on my phone, and he started laughing. वो जोर से हंसने लग गया, and then he questioned me like, you're interested in pageants, you want to be a Miss India? And I'm like, yeah, I want to be. And that is that moment when he had asked, when he would go to these other friends and, say things like, पता नहीं खुद को क्या समझती है, Miss India से इसको Miss India में participate करना है. Things like that, which is not directly connected to being Badi Heroine Banti, but indirectly they're trying to show you your place. And a similar question that has been asked, that खुद को क्या समझती है. So I have had a lot of such instances. That's one thing. Other thing, whenever जब भी जिंदगी में कुछ अलग करने जाओ, जो तुम्हारे आसपास वालों के समझ ना आए, तो बस वो शुरू हो जाते हैं सेम तानों के साथ कि खुद को क्या समझती है, बड़ी हीरोइन बनती है. हमारी या फैमिली भी कभी कभी हमारे सपनों को नहीं समझ पाती है शुरुआती दौर में. So initially they also get this question, they also try to pull you down, not in a negative way, but to remind you that this is not meant for us, probably. Like my dad would say things like, being a Miss India or being an actor is not for middle class families, Nehal. This is too outrageous of a dream for you to think of. So I think I am not even exaggerating this, Divya, but I think every second or third day of my life, I have somewhere been pushed into a situation where I've been reminded that, oh, what do you think of yourself? Badi Heroine Banti, that Tana. So I think या it's been quite often for me, for sure. I Yeah. I think I completely agree. We all think हमें कहीं कहीं ना कहीं ऐसा ताना दे दिया जाता है. Yeah. एंड ये सीरीज भी काफी मतलब फीमेल सेंट्रिक है. राजीव से मेरा ये सवाल है कि फॉर मेन, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए भी तो स्ट्रगल्स होते हैं, और किस टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं? आपको अगर कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ा और वो इतने हाईलाइट नहीं होते हैं, वो चीजें दब के रह जाती हैं, जो चैलेंजेस आई गेस मेल फेस करते हैं अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में. व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? No, but I remember it was like 1 year in my acting career, जो शुरुआती दौर था.
one of my very, very good friends, close friends, he called me up and he said, and he's a very, you know, he never showed his emotions generally in life. I remember he called me up and he broke down. He started crying. I said, "भाई क्या हो गया?" So he said, "यार मेरी ना, I've applied to, मतलब I gave interviews to 2 companies और दोनों से rejection आ गया है." And that time I just started acting and it was 1 year in my acting thing. And I told him, कि यार I to get rejected 10 times in a day. You know, he got rejected twice in like 2-3 months. I got rejected twice, 10 times in a day. So the thing is, कि in any actor's career, especially when जब आपका when nobody in your family is part of the film industry or the fraternity, then you have to go through the, you know, a proper, you have to go through a route of, you know, of, well, auditioning and auditioning. Sometimes initially तो आपको पता भी नहीं होती कि auditions हो कहाँ रहे हैं, right? So धीरे 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 you find your path. But I have to say कि it is not a struggle per se in that sense because you're enjoying it. You've chosen the line of work, right? And you know कि भैया competition बहुत है, आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको ये सब पता है. और अगर आप अपने आप को बोल दो कि यार एकदम घुसा दो अपने जहन में कि भाई ये सब है, this is the ground reality, then you won't have time to complain. Then you can work on your craft and, you know, over the years जब आपको मौका मिलेगा, then your craft can shine. But having said that, मतलब the competition is intense. It is और ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाई आपको पार्ट मिला है बट किसी की वजह, फॉर सम रीजन, किसी के कनेक्शन के थ्रू किसी और को वो पार्ट मिल गया, तो इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग इन दैट सेंस. एंड एज एन एक्टर, spiritually, mentally and physically, you're broken down every day, and hence you have to be centered enough to realize कि भाई it's okay, it's fine, such is life and I'm doing my bit. And I always believe कि अगर मतलब ये थोड़ा वो मेटाफिजिकल उसमें जा रहा है, बट अगर आप, if you tell yourself कि it's a service, you know, this body has been given to me by the creator to provide a certain service, then you know कि the work you do will take you through and you will get opportunities through it. But having said that, मतलब काफी ज्यादा, you know, there was one instance when I remember I was standing in a line of like 200 people for an ad audition, and जब मैं finally after 2-3 hours when I met the casting assistant, he said कि sorry, you don't fit. So yeah, so it is matlab, these stories are, everybody has these stories, right? It's just how I feel कि what doesn't, if it doesn't break you, you have to break through it. So, and that's how, you know, you get your breakthrough. So, and that's exactly. Okay, coming back to बड़ी हीरोइन बनती है, ट्रेलर में मुझे जो समझ आया कि ये हीरोइन और हीरो के बीच, यानी मतलब प्रेरणा एंड राजीव के बीच थोड़ा सा लव हेट काइंड ऑफ रिलेशन दिखाया है. और क्या है ये, मतलब प्यार होगा नहीं होगा, सिचुएशनशिप है, क्या है? सिचुएशनशिप, आई थिंक कह सकते हो अगर आपको कहना है तो. पहले तो मुझे जानना, सिचुएशनशिप आप लोगों के लिए क्या मतलब है सिचुएशनशिप का? What a question. Very popular term these days. Very Gen Z question that you asked Very us. Gen Z, yes. But honestly, because I don't know what a situationship is, but looking at the word, I think maybe it's something like कि हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, maybe something is there or not, they are not sure of it, something like that. So I think, okay, if you can spot situationship here in this situation, maybe, I mean, it's your perception, but I don't exactly know. Wait, I'll have to ask Rajeev. No, but maybe Divya ji, I wanted to ask you, what is a situationship? Because every day there's a new term which comes out and you don't know. Even I don't know. I'm asking you guys, that's why. Situationship is, I studied on social media, guys. Oh, I thought you wanted to say I've done some social Wrong studies. People have been talking. I'm the Gen Z here. Yeah, so situationship is when you take all the benefits of being in a relationship without commitment. So you're emotionally involved, you're going on dates with the person, you're doing everything that a person in a relationship would, but there's no commitment. And then if it depends whether you're in an exclusive situationship or in an open situationship. So there are ways out of situationship as well. So that's about it. I personally
don't think Kajol, and Yeah, Advait are even not now, in a situation. even I don't think now that it's a Yeah, situation. yeah, they're I mean, not. learning about what it It's is. yeah, it's just lots of love, but a little bit of hate because they're two opposite characters as well. I'm not going to spill a lot out of this because I would want you, Divya, to watch the series and decide whether it was a situationship or not. Definitely I'm going to watch and I guess everyone is going to watch. Well, मुझे नेहल से पूछना है क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि प्रेरणा इज अ हीरोइन, राजीव इज अ हीरो. नेहल, व्हाट डज योर कैरेक्टर डू इन द सीरीज? I think it's presumptuous of you, Divya, to think Prerna is the heroine. Yeah, I Oh. mean, Just kidding. सडनली I ट्विस्ट आ think, जाएगा. sorry. सडनली ट्विस्ट आ जाएगा. Yeah, I mean it's quite an unpredictable story. Mhm. I will obviously not tell you what am I doing, but I am contributing in the story very, very nicely in a very fun How, way that is it you some would kind of is it some kind of negative character, villainish kind of? no. Do you think I can play a villain? It is about acting. You think I can play a villain? But I mean, my character is quite unpredictable in a way that you will not be able to tell what is it. You can't give a title or a tag to Anastasia because she's a boss woman, for Hmm. sure. She's the head Hmm. designer at Advait Singhania's firm. Hmm. And yes, she has this command. She's a very career-oriented woman, but she also comes with her a little bit of personal story to it. So I think it's gonna be I'm very grateful that I had a good graph as Anastasia to play her. And where it ends, then we'll watch where it ends. Okay. बाय द वे, मुझे ये जरूर समझ आया है कि राजीव की फिजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है सीरीज में कि हाउ अ पर्सन इतने एब्स कैसे मेंटेन कर रखे हैं और ऑल दैट. राजीव, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? कैसे मेंटेन करते थे एब्स और भी फिटनेस? मैं वो स्टूडेंट हूँ जो हर दिन 2-2 घंटा पढ़ता है. तो ओह. मैं बचपन से, बिकॉज आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, सो द बॉडी हैज बीन लाइक दैट. एंड फिर वही शूट के दौरान थोड़ा बहुत इधर उधर खाना कम किया, मीठा कम किया, Rajiv, कार्बोहाइड्रेट्स कम किए. don't be so modest. It's never thoda bahut, Divya. It's never thoda bahut. I know नहीं. because I would chill with Rajiv and he's worked hard. Come on, just say it, Rajiv. No, thank you so much, but जब लोग मुझे कहते हैं कि यार अच्छा कल बॉडी 2 दिन में बॉडी का शॉट है, पानी मत पियो वगैरह वगैरह, ऐसा आई यू क्रेजी? बिकॉज मेरा ये मानना है कि यार मेरा कैरेक्टर तो पानी पिएगा ना, उसको नहीं पता कि ही इज बीइंग शॉट ऑन कैमरा ना. सो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू ईट और ड्रिंक बिकॉज इट्स फाइन. बट यस, थोड़ा बहुत, थैंक यू नेहल. मेहनत मेहनत ऑब्वियसली जाती है. एंड या थोड़ी बहुत मेहनत की और अच्छे से हमारे सिनेमेटोग्राफर ने लाइट किया और मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप डाला और अच्छे शॉट्स लगाए और बॉडी नहीं ठीक है. नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें देखा था 4 मोर शॉर्ट्स में, तब भी उतने ही फिट थे. Amazon प्राइम में मिनी टीवी में तब भी उतने ही फिट है. सो देयर इज समथिंग एल्स व्हिच यू आर नॉट टेलिंग अस. नो नो, बट लाइक आई सेड, नो, मैं बचपन से मतलब फिटनेस में रहा हूँ, एथलेटिक्स करता ओह. हूँ. तो ओके. इसीलिए तो हाँ, तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग है. सो प्रेरणा, राजीव, नेहल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और डेफिनेटली मैं तो बड़ी हीरोइन बनती है देखने ही वाली हूँ, बिकॉज आई लव these kind of romantic series, and I guess everyone is going to watch lovely trailer. We hope to see your acting, and it was a lovely interaction with you. थैंक यू सो Thank मच. you, same here, Divya. Divya. Thank you Thank for you. doing this. Thank you.